बिहार जुडिशरी मेंस 2021 के एलिमेंट्री जनरल साइंस का पेपर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और सेक्शन ई देखेंगे। सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन है जिसमें से केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाई डू और डस मतलब क्यों जवाब देना है, ऐसा होता है क्यों होता है वो लिखना है। इसमें 5 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन यानी टोटल 20 मार्क्स के। पहला, वी सी वाटर ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल 20। पहला है वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। बहुत ठंडा पानी अगर आप ग्लास में रखते हैं तो बाहर में वाटर ड्रॉपलेट्स जमना शुरू हो जाता है। क्यों जमता है ये हमें जवाब देना है, आंसर लिखना है। द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ टम्बलर containing ice cooled water. This is because due to the interaction of thermal energy between one state to another state of matter, as the molecules of water vapor present in the air come in contact with a tumbler containing the cold water, it begins to release some amount of thermal energy. Due to this, the vapors get converted to liquid state and appear in the form of water droplets. Next, we need water. हमें water की जरूरत क्यों पड़ती है? ये आसान सा सवाल है, आप लोग लिख सकते हैं। हमारा बॉडी का मैक्सिमम पोर्शन वाटर से ही बना हुआ है। तो आइए देखते हैं। वी नीड वाटर टू डाइजेस्ट आवर फूड एंड गेट रीड ऑफ वेस्ट। वाटर इज नीडेड फॉर डाइजेस्टिव juices, यूरिन। वाटर इज द मेन ingredient in perspiration, also called sweat. Besides being an important part of the fluids in our body, water is needed by each cell to work. पानी बहुत ही important चीज़ है। ये तो हमारे बॉडी के लिए था और भी आप लिख सकते हैं जैसे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। इन सब के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, एन आयरन नेल सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एक छोटा सा आयरन का कील रहता है, पानी पे आप रखिएगा डूब जाएगा, तैरेगा नहीं। ये क्यों होता है? The density of an iron nail is more than the density of water. This means that the upthrust of water on the iron nail is less than the weight of the nail, so it sinks. Next, our palm feel cold when we put some petrol on it. When we put some petrol on our palm, it evaporates. During the evaporation process, the particles of liquids absorb energy from the surface of the palm. As we all know, that energy is neither created nor destroyed. The loss of energy results in making the surroundings cool. Next question. We see only one side of the moon always. इसका आंसर क्या है? One revolution of the moon around the earth takes about 27 days. Incidentally, the moon's rotation about its own axis also takes nearly the same time. One day of the moon is equal to 27 earth days, so only one side of the moon can be seen from the earth. Next, question number 10. Last question. What happens when? इसमें भी 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का यानी टोटल 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 9 करना है या क्वेश्चन नंबर 10 करना है। पहला क्वेश्चन, सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हाट हैपेंस व्हेन? मतलब अगर सॉल्ट को पानी में घुलाया जाएगा तो क्या होगा? When table salt is placed in water, the slightly electropositive sodium portion is attracted to the slightly electronegative oxygen portion of water molecules. At the same time, the slightly electronegative chlorine portion of NaCl is attracted to the slightly electropositive hydrogen portion of water. In either case is a true bond created, but the attractions set up a tug of war in which the ionic bonds of NaCl and covalent bonds of H2O are both strained. The stronger covalent bonds of water, which is also held together generally by hydrogen bonds between water molecules, win out and NaCl is pulled apart, with the Na positive and Cl negative ions setting loosely in place between the intact H2O molecules. NaCl is then dissolved. Next question. Fossil fuel like coal is burnt. अगर कोयला को जलाया जाएगा या कोई अदर fossil fuel को भी जलाया जाएगा तो क्या होगा? When fossil fuels are burned, they release carbon dioxide and other greenhouse gases, which in turn trap heat in our atmosphere, making them the primary contributors to global warming and climate change. When fossil fuels are burned, they release nitrogen oxides into the atmosphere, which contribute to the formation of smog and acid rain. When fossil fuels are burned, they release nitrogen oxides into the atmosphere,
which contribute to the formation of smog and acid rain. Next question, ribbon of magnesium is burnt. When magnesium ribbon burns in oxygen, magnesium oxide is formed with the production of dazzling white light. After it burns, the white powder of magnesium oxide gets formed. Burning of magnesium is an exothermic process. Next, hot water is added to a plastic bottle. When we pour boiling water into a plastic bottle, the bottle shrinks, wraps, or twists. Plastic bottles are usually made from polyethylene terephthalate (PET). When we pour the boiling water into the bottle, the shrinking, warping, twisting we see is a result of the plastic bottle undergoing glass transition. नेक्स्ट एसिड इज एडेड टू बेस. एसिड अगर बेस से ऐड किया जाएगा तो क्या होगा? अगर मान लीजिए दोनों का जो स्ट्रेंथ है सेम है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा. अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है तो वो एसिडिक हो जाएगा जो निकल के आएगा सॉल्यूशन. अगर मान लीजिए एसिड वीक है बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो बेस हो जाएगा. आइए देखते हैं. If we mix equal amounts of an acid and a base, then two chemicals essentially cancel out each other and produce salt and water. Mixing equal amounts of a strong acid with a strong base results in a neutral solution whose pH value remains 7, and this type of reactions are known as neutralization reactions. Hence, we can say that when we mix an acid and a base together, then salt formation takes place and water is also released. ये था हमारा साइंस का क्वेश्चन. आई होप वीडियो यूजफुल लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.